Hello, my dear kids. Welcome back to Technology series by Amit Publishing House. Children, we are doing Maths Class 4 and this is a book. The name of your book is Joyfull Mathematics. So, let's start a new chapter today. This is chapter number 8 of the book. And the name of the chapter is Multiples and Factors. So, here let's do this activity given. You have to choose any number in the number grid, say 7. So suppose आपको कोई भी एक number choose करना है. Suppose हमने 7 को choose किया है and color the box. So 7 is already colored here. Now you have to multiply the chosen number by 1, 2, 3, 4, 5. जिस number को हमने choose किया उसे 1, 2, 3, 4 and 5 से हमें multiply करना है. And so on and color those with सेम कलर और उन्हें उसी कलर से आपको कलर करना है. All the colored numbers are the multiples of the chosen number. So जितने भी numbers यहाँ पे कलर किए गए ये सारे इस पर्टिकुलर 7 के मल्टीपल्स हैं. So यहाँ पे कौन कौन से numbers को हमने कलर किया है? 40, 21, 28, 35, 42 and 49. So 1 से 50 के बीच में ये जितने भी येलो कलर के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, these all are the multiples. Now to make it more interesting, you may place राजमा चना etc. So इन सारे आर्टिकल्स को भी रख के आप इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं. Now let's learn what are the multiples. So multiple of any number is a number which can be exactly divided by that number. So multiple क्या है? किसी भी नंबर का हो वो नंबर होता है जिसे हम डिवाइड कर सके किसी जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है उस नंबर से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक नंबर 5 मल्टीप्लाई 4. सो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 5 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 20. सो 20 इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ 5 एंड 4. सो यहाँ पे 5 क्या है, सॉरी 20 क्या है, मल्टीपल है 5 का और 4 का. मीन्स 5 की टेबल में भी आएगा और 4 की टेबल में आएगा, दोनों से डिवाइड हो सकता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड. सो ये जो प्रोडक्ट होता है दो या दो से ज्यादा नंबरों का वो होता है मल्टीपल इन नंबर्स का. नाउ फाइंडिंग मल्टीपल्स. We can find a multiple of a number by multiplying that number 1, 2, 3, 4 and so on. So हम किसी भी number का multiple find out कर सकते हैं. For example, find the first 6 multiples of 4. 4 के 6 multiples हमें find out करना है. So here the 6 multiples of 4 कैसे find out करेंगे हम? 4 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से and 6 से हमें multiply करना है. And what we get? 4, 8, 12, 16, 20 and 24. So 4, 8, 12, 16, 20 and 24 are the first 6 multiple of 4. So ये 4 के पहले 6 multiples हैं. Let's learn about the properties of multiples. Every number is a multiple of itself. हर एक number जो है multiple है वो खुद का. 5 is a multiple of 5. 5 का multiple है. For example, 5 ones are 5. Now every number is a multiple of 1. जितने भी number हैं सब 1 के multiple हैं. So 2 is a multiple of 1 and here 2 multiply 1 is equal to 2. Every multiple of a number is greater than or equal to the number. So जो भी multiple होता है किसी भी number का वो चाहे तो greater होता है या फिर equal होता है उस number के. And we have multiples of 5 such as 5, 10, 15, 20 and the multiples of 8 are 8, 16, 24 and 32. Clearly, the smallest multiple of 5 is 5 and the smallest multiple of 8 is 8. So, यहाँ पे हमें ये बात पता चल रही है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है. Multiples of any number are infinite. So किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की अगर हम बात की जाए तो वो इनफाइनाइट होता है. मीन्स आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा मल्टीपल्स होते हैं. You can find out infinite multiples of a particular number.
किसी भी नंबर के हम इनफाइनाइट मल्टीपल्स को ढूंढ सकते हैं. Multiples of 4 are 4, 8, 16, 30 and so on. Now let's see some examples and work out according to it. First example here is given that find the first 4 multiples of 8. हमें 8 के 4 multiples find out करने हैं. So यहाँ पे the first 4 multiples of 8 are 8. You have to multiply 8 one times, then 2 times, then 3, then 4. So whatever answer we get 8, 16, 24 and 32. Similarly, is 42 a multiple of 8? क्या 42 एक 8 का multiple है? So 42 does not appear as a product of 8 in the table of 8. So यहाँ पे 42 does not comes in the table of 8. That's why it's not the multiple of 8. ये 8 का multiple नहीं है. Now let's look example number 3. Is 96 a multiple of 8? क्या 96 8 का multiple है? Dividing 96 by 8. जब हम 96 को 8 से divide करते हैं, there is no remainder. Therefore 96 is the multiple of 8. So जब भी हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या दिखेगा हमें? जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब that number is a multiple of that particular number. Now example number 4. If is 44 a multiple of 3? क्या 44 3 का multiple है? So let's see when we divide 44 by 3. जब हमने 44 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया? यहाँ पे एक रिमाइंडर आ रहा है, that is 2. तो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब it is not a multiple of that particular number. So 44 is not the multiple of 3. In case there is a remainder left after the completion of the division process, then the number given is not the multiple of that other number. Now let's learn some common multiples. A number can be a multiple of 2 or more numbers. एक नंबर जो है 2 से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल बन सकता है. Let us take 3 and 6. चलिए 3 and 6 को लेते हैं. Multiple of 3 is 3, 6, 9, 12, 15 and 20. So these are few of the multiples of 3. Now let's look at the multiples of 6. 6 के multiples हैं 6, 12, 18, 24 and 30. अब हम जब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमने क्या देखा कि the first 3 common multiples of 3 and 6 are 6, 8, 12 and 18. तो 6 और 3 की टेबल को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि दोनों की टेबल में जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो है 6, then 12 and then 18. So the least common multiples of 3 and 6 is 6. So 3 और 6 जो है ये least common multiple है 6 of 3 and 6 के जो least common multiple है वो है 6. A number that is a multiple of 2 or more numbers is called a common multiple. So वो number जो multiple होता है 2 या उससे ज़्यादा numbers के उसे हम कहते हैं common multiple. Now let's do this exercise number 8.1. Here the first question is write the first 5 multiples of the following number. So first 5 multiples लिखने हैं हमें in numbers. So what we have to do? We have to multiply 18 with 1, 18 with 2, 18 with 3, 18 with 4 and 18 with 5. Because we have to find out the first 5 multiples. पहले 5 multiples चाहिए. So we have to multiply all these numbers with 1 to 5. So after multiplying what we get? The first 5 multiples are 18, 36, 54, 72 and 90. So children, these are the first 5 multiples of 18. Now similarly, let's do the next question here. Let's do this E part. So here, when we multiply 16
5 times what we get. So the multiples we get is, so children, these are the multiples of 16. 16, 32, 48, 68 and 80. Now let's write down the multiples of 8. Here again we have to multiply 8 with 5 times. So children, these are the multiples of 8. When we multiply 8 5 times, we get these numbers. So similarly, you have to do the rest of the questions. Now let's move on to question number 2. Fill in the indicated multiples of the following. So यहाँ पे आपको multiples ढूंढने हैं in numbers के. So here you have to write down the 7th multiple of 3. So we have to multiply 3 by 7. It's 21. Next, 4 7 times. Now similarly, you have to multiply 3 4 times and 4 4 times. Now 3 3 times, 4 3 times and 4 5 times. So we have written the 7th multiple and the 4th multiple, 3rd multiple and 5th multiple of 3 and 4. So similarly, children, you have to do rest of the questions on your own. You have to find out the multiples of these numbers. Now let's fill in the blanks. Dash is a multiple of every number. So 1 is a multiple of every number. So 5, 10, 15, 20 are the multiples of 5. Multiples of any number are, किसी भी नंबर के मल्टीपल को क्या कहते हैं? They are infinite. Means you cannot count the number of multiples of any of the number. So similarly, children, complete the rest of the questions, read it and complete it. Now let's move on to question number 4. Find first 3 common multiples of the following. So यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं इनके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और वो भी कॉमन होने चाहिए. So let's do this question number A. So 3 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हमें. So it's 3, 9, 12, 15 और ऐसे 5 के ढूंढने हैं. So what we have to do, we have to find the first 3 common multiples. So common multiples are of 3 and 5 is, so 5 यहाँ पे आ रहा है but it is not here. 10, it is also not written. 15, so 15 is the first common multiple. Now अब second multiple ढूंढते हैं. So here the second multiple is here. So first है 15, next 30. Let's look this and this. So children, the first 3 common multiples of 3 and 5 are 15, 30 and 45. So you have to find the multiples like this. Now let's do the question number D. So here you have to find out the multiples of 3 and 6. So here the first multiple is this 6. Now the second is 12 and the third one is 18. So here the common multiples of 3 and 6 is 6, then 12 and then 18. Now let's do this question number C.
common multiples of 8 and 16. Let's find out the multiples of E. So the multiples of 2 and 5 we are going to write. So here you can see 5 is not in the table of 2. 10 is the first multiple. Now 20 is the second multiple and 30 is the third multiple. So the common multiples are 10, 20 and 30. So these are the common multiples of 2 and 5. So similarly children, you have to do the rest of the questions on your own. Now let's learn what are the factors. So Kamal has 24 bottles of Pepsi to serve in his birthday party. So it's Kamal's birthday party और उसने 24 bottles खरीदी थी पेप्सी की birthday party में सबको देने के लिए. He can arrange them in different ways like this. अब उसे उन bottles को कैसे लगाना चाहिए. So one row of 24. तो 24 bottles की उसने एक row बना दी. दूसरा तरीका क्या है? उसने 12 के 2 rows बना दिए. तीसरा तरीका है उसने 3 row बनाई है. 8, 8 and 8 bottles की. चौथा तरीका है उसने 4 rows बनाई है. 6, 6 and 6 and 6 bottles की. So the number 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 are all the factors of 24. So ये सारे जो numbers हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये सारे जो हैं 24 के factors हैं. So we know that when we multiply two numbers, जब हम दो numbers को multiply करते हैं we get a product. हमें क्या मिलता है? एक product मिलता है. So we say each of the two numbers is a factor of the product. तो हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा ये जो दोनों हैं ये factor हैं. ये जो दोनों numbers हैं ये factor हैं उस product. Finding factor of a product. So we can find factor of a number by two methods. Two methods है जिससे हम ये find out कर सकते हैं. First is the multiplication and the second one is the division. Factors are the numbers which when multiplied gives the product. So इन numbers को जब हम multiply करते हैं हमें product मिलता है. So multiplication से कैसे हम factors को find out करते हैं? Let's see. In this method we try to find numbers whose product is the given number. इस method में क्या होता है? हम find out करते हैं उन numbers को जिनका जो product है वो वही same दिया हुआ number. Let's find the factor of 18. 18 is a factor number. So when we find out the factor of 18, we say 1 multiply 18 is 18. 2 multiply 9 is 18 and 3 multiply 6 is 18. So here the factor of 18 is 1, 2, 3, 6 and 9. 6, 9 and 18. These are the factors of 18. So ये multiplication methods था जिससे हमने factors को ढूंढना है. Now let's see how to find out the factors by the division method. In this method we try to find a number which divides the given number without remainder. So इसमें हम क्या करते हैं? एक number को ढूंढते हैं जिसमें जो divide करता है किसी भी number को बिना remainder दिए. So let's try to find out the factor of 36 in this method. 36 का factor ढूंढते हैं इस method से. So 36 से हमने 1 को divide किया we get 36. 36 से 2 को divide किया we get 18. 36 से 3 को divide किया 12. 36 से 4 को divide किया 9. And 36 divided by 6 is equal to 6. So here 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6 and again 9, 12, 18 and 36. These all are the factors of 36. Now let's learn some properties of factors. One is the factor of every number. One जो है हर एक number का factor है. And it is the smallest factor of a number. और ये किसी भी number का
सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर जो फैक्टर होता है खुद का. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ. जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो खुद होता है. एवरी नंबर एक्सेप्ट फॉर वन हैज एट लीस्ट टू फैक्टर. वन के अलावा जितने भी नंबर है उन सबके दो फैक्टर्स होते हैं. वन एंड द नंबर इटसेल्फ. एक वन होता है और दूसरा वो खुद का नंबर. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन द इक्वल ऑफ दैट नंबर. जो भी फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा कम होता है या फिर इक्वल होता है उस नंबर को. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली. जितने भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. मीन्स इसमें रिमाइंडर नहीं आता. सो नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज नंबर 8.2. So the first question here is 8 multiply 4, which is equal to 32. So 8 and 4 are the factors of 32. Now 3 multiply 7 is 21 and dash are the factors of 21. So 3 and 7 are the factors of 21. Now similarly 9 multiply 8 is equal to 72. So 9 and 8 are the factors of 72. Clear? Now, second question says use a graph paper and draw all possible rectangles you can using 18 squares. So 18 squares को use करना है और उनसे आपको जो है क्या बनाना है, rectangles बनाना है. Use a square to find the factor of 8. और उन squares को use करना है 18 के factor को find out करने के लिए. So this children you have to do on your own. Now let's move on to question number 3. Use multiplication method to find the factor of. तो हमें multiplication method को use करना है और factor को find out करना है. Here the first question is 65. So 65 के हमें factors find out करने हैं. So let's do it here. So here children we can divide 65 multiply 1 is equal to 65 and 5 multiply 13 is equal to 65. So here the factors of 65 are 65, 5, 1 and 13. So these are the factors of 65 here. So let's write it down 1, now 5, 13 and 65. Now similarly let's do the next question here. Let's do this C part. We have to find out the factor of 52. So 52 1 times is equal to 52. So children here the factors of 52 are 52, 1, 2, 26, 4 and 13. So let's write it here 1, 2, 4, 13, 26 and 52. So these are the factors of 52 here. Now let's move on to question number 4. Using division method, we have to find out the factors of 80. So 80 का factor निकालना हमें कैसे? By using the division method. So हमें यहाँ पे division method को use करना है. So let's do question number 1. 80 को हम divide करेंगे 1 से, will do get 8. Now at 80 will again be divided by 2. So we will get 40. 80 again divided by 4 is equal to 20. So here children, these are the factors of 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 and 80. So let's write them. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16,
20, 40 and 80. So children, these are the factors of 80. Now let's do this D part here. We are going to do D. So here children, the factors of 52 are 1, 2, 4, 13, 26 and 52. So similarly children, you have to do the rest of the questions on your own. You have to find out the factors using both the multiplication and the division methods. Now let's move on to question number 5. In each of the following circles, the factor of number from the choices given. You have to find out and you have to circle the factors. हमें factors को circle करना है. In numbers के यहाँ पे कुछ choices दिए गए. So let's see what are the factors of 24. So here the factor of 24 is 1, 2, 4, 3. So children, how can we find out the factor of this 24? कैसे हमने ढूंढा? हमने पहले 24 के सारे factors को निकाला by this multiplication method. अब क्या क्या factors है? 1, 2, 3, 4. So we have circled that. अब इसके बाद 6, 8, 12, 24. 6, 8, 12 and 24 is not written here. So here 12 तक हमने सर्कल कर लिया. Now similarly हमें जो दूसरे numbers हैं उनका भी factor निकालना है. So here let's find out the factor of this 64. So children, here we have find out the factors of 64 and the factors are 1, 2, 4, 8. Let's circle it. 1, 2, 4, 8. Now 8 is repeated again, तो हम उसे नहीं करेंगे. 16, 32, 64. 16 and 32 is not given here. So these are the factors of 64. Similarly, you have to find out the factors of B and C. Now let's learn about the various types of numbers. So here the first is the even number. A whole number exactly divisible by 2 is called an even number. कोई भी whole number जो 2 से divide हो जाए उस number को हम even number कहते हैं. Clear? Here the examples are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. These are the numbers. या फिर और a number having the digits these. वो number जिनके digit में last means जो digit है last के वो 0 से खत्म होते हो, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से खत्म होते हैं. At one's place, these are also called the even numbers. Now let's look at the some examples given here. 246, 1894, 5468 and 100 are even numbers. ये सारे जो numbers यहाँ पे दिए गए ये सारे even numbers होते हैं. Now let's learn what are odd numbers. Odd number क्या है? A whole number which is not exactly divisible by 2. वो number जो divide नहीं होते वो odd numbers कहलाते हैं. For example, 3, 5, 7, 9, 11, 13, now 15, 17, 19 and so on. A number having 1, 3, 5, 7 or 9 at its one's place. अगर one's place पे ये सारे number हैं इसका मतलब वो एक odd number है. For example, 315, 107, 1001 and 659 are the odd numbers. Now, what to remember? Any two odd numbers which differ from one another. कोई भी दो odd numbers जो एक दूसरे से different हो. By two are called consecutive odd numbers. उन्हें हम consecutive
odd numbers कहते हैं. Any two even numbers which differ from each other by 2 are called consecutive even numbers. कोई दो even numbers जिनके बीच में जो difference है वो from one another जो differ करते हैं एक दूसरे से बस 2 से उन्हें हम consecutive even numbers कहते हैं. One is neither prime nor composite. One जो है ना तो prime है ना ही composite number है. And 2 is the lowest and the only even prime number. 2 जो है सबसे छोटा और सबसे और एक इवन प्राइम नंबर है. 9 इज द लोएस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर. 9 जो है सबसे छोटा और कॉम्पोजिट नंबर है. नाउ लेट्स लर्न व्हाट आर प्राइम नंबर्स. नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या खुद का वो एक नंबर होगा. 1 और द नंबर itself are called the prime numbers. ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 19, 37 etc. are the prime numbers. Now what are composite numbers? So numbers having more than 2 factors. वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, these are called composite numbers. For example 4, 6, 8, 9, 10 etc. These are the composite numbers. So now let's learn how can we find out the prime and the composite numbers. We can learn it by the sieve of Eratosthenes. Eratosthenes is a Greek mathematician. Gave a method for finding out prime number. So ये एक mathematician है जिसने method ढूंढा था prime number को find out करने के लिए. By removing numbers that are not prime. उन्होंने क्या किया था, उन numbers को remove कर दिया था जो prime नहीं है. Now let us write the numbers from 1 to 100. चलिए हम numbers को 1 से 100 तक लिखते हैं. Number grade 1 to 100 is available in the maths kit. Here what we have to do, we have to cross 1 since 1 is not prime. तो 1 को cross करना है क्योंकि ना वो prime है ना ही वो composite है. Cross out all the 2 multiples of 2. अब 2 हमारा जो 1 के बाद नंबर आया तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है. तो हमने 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सबको क्रॉस कर दिया 100 में. अब हमें क्या करना है, 2 के बाद अगला नंबर है 3. सो वी हैव टू क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3. सो 3 के मल्टीपल्स में जितने भी नंबर है उन सबको क्रॉस करना है. अब अगला नंबर क्या बचता है, 5. अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हमें क्रॉस करना 100 तक. नेक्स्ट नंबर जो आता है वो 7. ऐसे 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है. सेम प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाते जाना है. जो भी नंबर आप 7 के बाद 11 बचता है तो 11 के मल्टीपल्स को हमें क्रॉस करना है. 17 बचता है उसके मल्टीपल्स को क्रॉस करना है. 13 बचता है उसके मल्टीपल्स को क्रॉस करना है. सो जब हम इन्हें क्रॉस करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे वो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. So these all numbers are the prime numbers. So इन सबको भी मैंने बताया. All the composite number between 1 to 100 are. जो बाकी जिन्हें हमने क्रॉस किया वो सारे क्या है, composite numbers हैं जिन्हें हमने क्रॉस किया. So हमने 4 से लेके 100 तक इन नंबर्स को क्रॉस किया है. Now what is co-prime? अभी हमने प्राइम नंबर पढ़े. What are co-prime? Two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor. दो नंबर्स को co-prime हम तब बोलते हैं जब उनके common factor नहीं होते. Other than 1. 1 के अलावा और भी कोई common factor ना हो. और two numbers whose HCF is 1. या फिर दो नंबर जिनके HCF क्या है, 1. So those numbers are called co-prime numbers. Co-prime numbers do not have to be prime numbers. तो ये जो co-prime number है इन्हें prime होने की जरूरत नहीं है. For example 7 and 10, 5 and 17 are co-prime numbers. Twin prime numbers. Twin prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. Twin prime numbers वो हैं जिनके जो difference है वो 2 होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल 3 and 5. अब जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 2. सिमिलरली 7 and 19, 41 and 43, 29 and 31, 71 and 73 are the twin prime numbers. Now, what is prime factorization? Prime factorization is finding all the prime numbers which multiply to make the original number. ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये एक मेथड है जिससे हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. किससे? मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर्स. द फैक्टर ट्री हेल्प्स अस फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. ये जो फैक्टर ट्री है हमें हेल्प करता है सारे नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर्स दिए गए हैं. ये दिस इज द फैक्टर ट्री. ये एक ट्री की शेप का होता है, इसलिए फैक्टर ट्री से कहा जाता है. सो this is factor tree method and this is prime factorization method. अब आप देखो इन दोनों मेथड्स को कैसे किया गया. सेम नंबर्स आर टेकन बोथ द वे. 72 को लिया गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब 72 को जो फैक्टर्स हैं 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करें विच इज अ प्राइम नंबर, सबसे पहले हम 2 से करेंगे. जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो हमने क्या देखा, 2 को जब हम 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 72. नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इस 36 को हमने डिवाइड किया और 36 को लाने के लिए हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई किया. तो 18 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आया 36. सिमिलरली जब हमने 18 को निकालने के लिए 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18. एंड सिमिलरली 9 को निकालने के लिए हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9. So here the factors of 72 are 2. These are the factors of 1, 2, 3. 1, 2, 3 and these two. So these are the factors जिन्हें मैंने सर्कल किया. ये factors हैं किसके? 72 के. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे करके देखते हैं. सो 72 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर है 36. अगेन इसे 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 18. फिर से 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9. और 9 को हमने अब क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो अब हमें 3 जो अगला प्राइम नंबर है उससे डिवाइड किया. सो आंसर है 3 एंड अगेन 2. सो चिल्ड्रन यहाँ पे हम ये जो नंबर्स लिखते हैं दिस इज द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं. कॉम्पोजिट नंबर वी डोंट राइट. सो अगेन वी गॉट द सेम रिजल्ट. जो हमें फैक्टर ट्री मेथड से आंसर मिला वही आंसर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मिलेगा. ओनली प्राइम फैक्टर्स आर कंसिडर्ड. नाउ व्हाट टू रिमेंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग सीक्रेट कोड बेस्ड ऑन नंबर्स. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्रेट कोड्स को ब्रेक करने के लिए. एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं. कैसे? प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स कुड बी कंसिडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये जो प्राइम नंबर्स हैं इन्हें जो है हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में लिख सकते, कंसिडर कर सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स फॉर एनी नंबर इज यूनिक. किसी भी नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होता है. नो टू नंबर्स कैन हैव द सेम प्राइम फैक्टर्स. कोई भी दो नंबर जो होते हैं उनका सेम प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 8.3. So children, here the first question is you have to write down the factors of the following numbers. So factor लिखने हैं हमें इन नंबर्स के. Here the number is 44. और अब इनके फैक्टर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, एनी ऑफ द मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं. सो हियर द फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 11. Clear? Now let's do the next question. Let's find out the factor of this 215. Let's divide it by 5 क्योंकि 2 से ये नहीं हो सकता. Last number is not an even number. So let's do it by 5. Now 43 is a prime number.
So here children, the factor of this number is 5 multiply 43. Now let's find out the factor of this number. 300 का factor जब हम निकालते हैं, so let's do it by 2. 2 से होगा क्योंकि last digit क्या है, even number. So we have to divide 300 by 2. 2 से divide करते हैं. So we will get this answer. Again ये 2 से divide हो जाएगा. Next, अब आप देखो ये 5 से divide करना है हमें. Now again with 5. So here the factors of 300 are 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 3. So these are the factors of 300. So similarly children, you have to do the rest of the questions. Now let's move on to question number 2. Express as a product of the three numbers. So हमें इनके ये जो three numbers three factors बताने हैं. प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं. सो सेम थिंग वी कैन डू, बट वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे हमें लिखना है. लेट्स फाइंड आउट ऑफ दिस 75. सो हियर द फैक्टर्स आर 5 multiply 3 multiply 5. So these are the 3 factors of this number. Now let's do this E part. So children, here the factors are 5 multiply 7 multiply 11. Now children, let's move on to question number 3 here. Write all the consecutive even numbers between 51 and 71. So 71 और 51 के बीच में जो भी even numbers आ रहे हैं, that we have to write. So here after 51, 52 will come, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 and 70. So these all are the consecutive even numbers between 51 and 72. Now what we have to do, we have to write down the first 7 multiples of 12. 12 के जो 7 multiples हैं वो हमें लिखने हैं. So which means we have to write on the table of 12 till 7. So here children, these are the 7 multiples of 12. Now let's do this E part. Write all prime numbers between 60 and 80. So 60 से 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं. So for that children, इसके लिए आपको जो हमने अभी टेबल पढ़ी थी उसे आपको अच्छे से लर्न करनी है. From 1 to 100 you have to learn all the prime numbers that are between 1 to 100. So children, all the prime numbers between 61 and 80 are 61. 60 to 80 is 61, 67, 70, 73 and 79. Now let's move on to question number 4. Write P for prime and C for composite number. So here 12 is a composite number. 31 is a prime number. 38 is a composite number. Again this is a composite number. So similarly, find out all the numbers here, whether they are prime number or composite numbers. Now let's move on to question number 5. Express as a product of prime numbers. तो आपको यहाँ पे prime factors बताने हैं product form. So let's find out the prime factor of 54. So here the prime factors are 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So children, you have to find out the factors, prime factors of all these 3 numbers like this only. Now let's learn about the divisibility test. What is divisibility test? So the divisibility test of a given number by any number, that is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9, can be performed simply by examining the digits of the given number.
जो भी डिजिट्स है उस नंबर के उसे अच्छे से एग्जामिन करके वी कैन फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. वी आर डिवाइडिंग 18 by 2 and we get 9 answer. 45 by 5 we get 9. 64 by 7 we get 9 and 94 by 7 we get 13. अब हमने जब इन तीनों को चारों एग्जांपल्स को देखा तो हमने देखा कि the remainder is 0 here and here it's 1 and it's 3 here. 18 is divisible by 2 and also by 9. ये चीज हमें पता चली. 45 is divisible by 5 and also by 9. 64 is not divisible by 7, so it is also not divisible by 9. 94 is not divisible by 7, so it is also not divisible by 13. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट एंड जो सेकंड थे उसमें हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिला. वो थर्ड और फोर्थ केस में हमें रिमाइंडर मिला था. इसका मतलब these numbers are not divisible by the given number. What is the divisibility test of 2? 2 की divisibility test हम कैसे चेक करेंगे? A number is divisible by 2 if the digits at the ones place is an even number. जो digit है ones place पे वो एक अगर even number है तो हम divisibility टेस्ट कर सकते हैं. That is the digit at the ones place is 0, 2, 4, 6 or 8. Here let's see the first example. Circle the numbers which are divisible by 2. वो numbers को हमें circle करना है जो 2 से divisible है. So the numbers are 9, 36, 88, 18, 40, 84, 96. क्यों? क्योंकि इनके जो लास्ट डिजिट्स है वो एक इवन नंबर है. इवन डिजिट है इसलिए ये डिविजिबल है. नाउ व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3? 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. तो हम इस केस में क्या करेंगे? जो भी नंबर है उसके जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद अगर वो 3 की टेबल में आता है इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो 3 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर दिया गया है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है. तो हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है इसके हर एक डिजिट को हम प्लस कर देंगे. 5 plus 8 plus 5 plus 1 plus 5 and the answer is 24. क्या 24 आता है 3 की टेबल में? Yes, it comes. So that's why this number is divisible by 3. इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. Now how to check the divisibility by 4? 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? The number is divisible by 4 if the number found by its last two digits is also divisible by 4. अगर उसके जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल है इसका मतलब कि वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 2832 which is 2832. क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हमने देखा कि इसका जो लास्ट में दो नंबर्स थे which is 32 वो क्या है 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं. So that's why this number is also divisible by 4. Now divisibility by 5. अब 5 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? If her digits are the ones or ones place is either 0 या फिर 5. अगर जो वंस प्लेस का जो डिजिट है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. अगर इन दोनों में से कोई भी है इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें सर्कल किया गया है जो 5 से डिविजिबल है. अब आप देखो जो फर्स्ट नंबर उसका लास्ट डिजिट क्या है 5. इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकता है. जो नेक्स्ट नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है 1 जो कि 5 की टेबल में नहीं आता. 5 या 0 में से कुछ भी नहीं है इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल. अब जो थर्ड नंबर है यहाँ पे लास्ट डिजिट है 0 जो कि 0 और 5 में से एक है. इसका मतलब ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है. लास्ट नंबर इसका लास्ट डिजिट है 3 जो कि 0 और 5 में से कुछ भी नहीं है. दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5. Now let's see the divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होगा अगर उसके जो डिजिट्स हैं उसको प्लस करने पे वो 9 से डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 4311 इज इट डिविजिबल बाय 9? क्या 9 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे हम?
इसके जितने भी नंबर है इन्हें प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आंसर आया 9 और 9 तो 9 के टेबल में आता ही है, इसलिए ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। नाउ वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर 10 से कैसे डिविजिबल है, तो क्या करना है, हमें लास्ट का डिजिट देखना है, वंस प्लेस का डिजिट देखना है, और वो क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। अगर 0 है लास्ट में, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। सो यहाँ पे एक नंबर दिया है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 0, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0, ये भी डिवाइड हो जाएगा। थर्ड नंबर को जब हम देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट है 4, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली जो फोर्थ नंबर है इसके भी जो लास्ट के 2 डिजिट है, बट हमें लास्ट वाला देखना है, तो लास्ट इज 0, सो ये भी डिवाइड हो जाएगा 10 से। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 8.4। 8.4 एक्सरसाइज करते हैं। मेंटली वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। हमें जो है कुछ भी लिखना नहीं, मेंटली वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। व्हिच आर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 3 है, नहीं ये नहीं है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो यस दिस इज डिविजिबल। अब अगेन यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं डिवाइड होगा। यहाँ पे 8 है जो कि एक इवन नंबर है, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 है जो कि एक इवन नंबर है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। So these 3 are the answers. Now the second question is saying which of the following numbers is divisible by 3. 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं। So when we add this, so 7 plus 1 8 and 8 plus 8 is 16. तो आंसर आ रहा है 16, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब है डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर को प्लस करते हैं। 4 plus 8 is 12, जो कि कहाँ आता है, 3 की टेबल में आता है, सो ये नंबर डिविजिबल है 3 से। अब सिमिलरली लेट्स सी दिस नंबर 6 plus 7 it's 13, तो ये भी 3 की टेबल में नहीं आता। अब हमने इसे प्लस किया, 3 plus 3 6, so ये तो आता है 3 की टेबल में, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल। अब इस नंबर को देखेंगे, 8 plus 2 10 plus 5 15, अब ये भी 15 भी आता है 3 की टेबल में, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल है। अब सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 होना चाहिए। क्या ये 5 है, नो, दिस नो, दिस यस, दिस वन यस, और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 है, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। Similarly, which of the following number are divisible by 10? 10 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को देखना है, वो 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है, 4, लास्ट डिजिट 0 मीन्स दिस इज डिविजिबल। लास्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 3, लास्ट डिजिट 0, सो इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। So similarly children, you have to do this 5 to 8 questions. Now let's learn what is the least common multiple, which is LCM. LCM क्या होता है? So the least common multiple, which is LCM of the two or the more numbers, is the smallest number. जो LCM है 2 या ज़्यादा नंबरों के, वो smallest number होता है, which is the multiplied of each of the number. वो क्या होता है, multiple होता है हर एक नंबर का। Consider two numbers 12 and 40. So 12 और 48, तो 12 के यहाँ पे जो भी मल्टीपल्स दिए गए हैं वो है आपके सामने 12, 24, 36, 48, 60, 72 and so on. Similarly, the multiples of 18 are 18, 36, 54, 72, 90 and so on. So अब इन दोनों नंबर से मीन्स जब हम 12 और 18 के मल्टीपल्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 36 और 72 दोनों टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब 36 और 72 क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं इन दोनों के। We find that 36 is the lowest or the least common multiple of 12 and 18. So 36 जो है lowest common multiple है इन दोनों का, and it is divisible by both 12 and 18. इससे जो है दोनों 12 और 18 से डिवाइड कर सकते हैं। Now let's find the LCM by prime factorization method. Prime factorization method से हम LCM निकालते हैं।
सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 64. So, जब हमने 36 का एलसीएम निकाला, 36 जो है फर्स्ट हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से ही हम ये करते हैं, तो 2 से जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 18. अब 18 को अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9. 9 को अब हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, और 3 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1. सिमिलरली हमने 64 का एलसीएम निकाला है, तो 64 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर है 32. अगेन 2 से डिवाइड करने पे 16, 2 से डिवाइड करने पे 8, 2 से डिवाइड करने पे 4, एंड अगेन 2 से डिवाइड करने पे 2, एंड 2 से डिवाइड करने पे 1. सो जब हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर किया, जब हम 13 के फैक्टर्स को और 64 के फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे तो हमने क्या देखा कि 36 और 64 में जो है 2 इज कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है यहाँ पे. सो 2 हैज अकर्ड 6 टाइम्स एंड 3 हैज अकर्ड 2 टाइम्स. 3 जो 2 बार आया है, बट 2 जो है 6 टाइम्स आया है. सो here the LCM of 36 and 64 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 6 times, multiply 3 multiply 3. So the answer is 576. Now finding the division by LCM by division method. With division method है जिससे हम LCM को find out करें. So when we see this division method, जब हमने division method को अपनाया तो हमने क्या देखा कि जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, so 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. So this is the answer, और हमें जो आंसर मिला वो है 144. Now let's do this exercise, children. Exercise 8.5. So here the first question is you have to find the LCM of the numbers given below. हमें क्या करना है, LCM ढूंढना है इन नंबर्स का जो नीचे दिए गए हैं, एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका LCM फाइंड आउट करना है. So let's find out the LCM of 50 and 60. So children, when we find out the LCM of these two numbers, what we get? These two are the common. यहाँ पे 2 common, यहाँ पे 5 common है. अब इस common वाले 2 को हमने यहाँ रख दिया है, common वाले 5 को हमने यहाँ लिख दिया है. बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया. So जब हमने इन सबको सॉल्व किया, so we get this answer which is 300. So here the answer will be 300. Similarly, we can find out, let's do this F part here. So we have to find out the LCM of this 15, now 60, now 105. So when we find out the LCM of all these, तो 15 का है 3 multiply 5, 60 का है 3 multiply 5 multiply 2 multiply 2, and 105 का है 3 multiply 5 multiply 7. So अब इन तीनों में 3 is common and this 5 is common. So 3 multiply 5 multiply, अब जो बचे हुए नंबर है 2 multiply 2 multiply 7. So children, when we multiply all these 3 numbers, we get the answer which is 420. So here the LCM of this number is 420. So like this, you have to solve the rest of the questions. You have to find out the LCM and then compare the numbers. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now let's move on to question number 2. Find the LCM by the division method. So division method से हमें क्या करना है, LCM को find out करना है. Here the first number is 36 and 48. So अब हम 36 और 48 का LCM निकालेंगे division method से. So 2 की टेबल में हम पहले 36 को देखेंगे. Now again it can be divided by 2. 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा ये. अब क्योंकि ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे ही लिख देंगे.
अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो जब हमने 12 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 6। नाउ 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 are 9 and 3 2s are 6. नाउ 3 1s are 3। अब क्योंकि 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे 2 को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। नाउ 2 से अब हम डिवाइड करेंगे जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता। सो हियर the LCM of 36 and 48 is 2 multiply how many times? 1 2 3 and 4। 2 को हमें 4 times multiply करना है and 3 को हमें 2 times multiply करना है। So children, जब हमने इसे multiply किया we get the answer as 144। So here the LCM is 144। Clear? I hope आपको समझ में आया होगा। Now let's do another question here. Let's do this part, H part, 36, 54 and 72। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 18। सो चिल्ड्रन हमें तब तक इसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जब तक यहाँ नीचों में तीनों जगहों पे 1 ना आ जाए। तो we can see the LCM of this number is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3, 3 times 3 and 3 times 2. So children, here the LCM of this number is 216. So similarly you have to do the rest of the questions here. Now what is highest common factor, which is HCF? अभी हमने LCM पढ़ा, अब हम HCF पढ़ेंगे। highest common factor क्या है? Let's see the common factors first. The first example is given. Consider two numbers 18 and 24. दो नंबर दिए गए हैं 18 and 24. Factor of 18 दिए गए हैं 1 2 3 6 9 and 18। और factors जो 24 के हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 and 24। The common factors of 18 and 24 are, जो दो common factors हैं इन दोनों numbers के, जो दोनों में similar है वो है 1 2 3 and 6। HCF is the highest number which divides two or more numbers together। HCF वो सबसे highest number होता है जो दो एक जैसे numbers को divide करता है। HCF by prime factorization of factor tree method। So HCF को कैसे हम करेंगे prime factorization method से? So factorization a number into a set of prime numbers is called prime factorization। So किसी भी number को हम sets में divide कर दें prime numbers के, उसे हम prime factorization कहते हैं। For example, let's see the example। We have to factorize 12। 12 को हमें factorize करना है। So 12 को factorize करने के लिए 2 multiply 6 किया, 3 multiply 4 किया and 2 multiply 2 multiply 3। So here children, 12 is factorized into one prime and one composite number। So यहाँ पे 12 को जब हम factorize कर रहे हैं तो एक prime number और एक composite number है दोनों ही केस में। But here 12 is factorized into prime factors only। लेकिन यहाँ पे सिर्फ prime numbers को यूज किया गया 12 को factorize करने के लिए। Example 2 को जब हम देखते हैं तो we have to here what we have to do, we have to find out the factors of 12 and 16। 12 और 16 के हमें factors निकालने हैं। So जब हमने 12 के factors निकाले तो it's 2 multiply 2 multiply 3, और जब 16 के factors निकाले तो ये है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। Now we have to find the HCF of 24 and 40। So prime factor method से जब हमने 24 का LCM factor निकाला तो it's 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, और सिमिलरली हमने जब 40 का निकाला तो it's 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। तो अब हमने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, दोनों में से हमें कॉमन फैक्टर्स को निकाल लिया। ओके, कॉमन फैक्टर्स को निकालना है, बाकी नंबर्स को हमें छोड़ देना है। एलसीएम के केस में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों नंबर्स को, लेकिन हम एचसीएफ करेंगे तो हमें बाकी नंबर्स को छोड़ देना है। जिन नंबर्स को हमने कॉमन लिया है सिर्फ उन्हें मल्टीप्लाई करना है।
सो 2 कितनी बार लिया है? 1 2 3 3 टाइम्स लिया है. सो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 4 4 2 8. So here 8 is the answer. Now HCF by division method. To find the HCF by division method, divide both the numbers together by the common prime factors. So हमें क्या करना है? दोनों ही numbers को उनके common prime factors से divide करना है. Stop dividing when there is no common factor. तब हमें जो है डिवाइड बंद कर देना है जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स. हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स के टू गेट द HCF को पाने के लिए. हियर द एग्जांपल इज फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 को हमें क्या करना है? HCF निकालना है. सो जब हमने 12 और 18 का HCF निकाला, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एज दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर. अब इन दोनों नंबर्स को हम आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ सच कॉमन फैक्टर्स इज 2 मल्टीप्लाई 3. सो इन दोनों को ही हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज 6. सो द HCF ऑफ 18 and 12 is 6. Now let's move on to exercise number 8.6. Here we have to find the factor of the following numbers and write the common factor in the shaded part. So इन दोनों numbers की common factors निकालने हैं और उन्हें shaded part में लिखना है. So let's find the common factor of these numbers. तो जब हमने इन दोनों के common factors निकाले, factors of 2r and factors of 16r. Now what are the common factors? So here the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, let's find out the factor of 16. So here the factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स. इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2 and 4. So these are the common factors. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. So these are the common factors. Similarly, you have to find out the factors of the rest two numbers here, children. रेस्ट टू जो नंबर दिए गए इनके भी फैक्टर्स आपको ऐसे ही निकालने हैं जैसे हमने 12 एंड 16 के निकाले हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग. इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं. सो लेट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 फर्स्ट. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1, 2 and 4. Similarly, let's find out the common factor of 12. So the common factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So we are doing this question, children, and the common factors of 4 is 1, 2, 4. And the factors of 12 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 12. Now we have to find out the common factors. Common factor निकालने के लिए इन दोनों में जो common होगा it's 1, 2 and 4. So here the common factors are 1, 2 and 4. Clear? Now let's do another question. Let's find the common factors of 9, 3 and 12. So 9 के factors निकालने के लिए, so the factors of 9 are 1, 3 and 9. Similarly, let's find out the factors of 3. So the factors of 3 is 1 and 3 only. Now the factors of 12. So the factors of 12 is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So
Now we have to find out the common factors of these three. तीनों का जो common factor है वो है 1. So the common factors are 1 and 3. So similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here. You have to find out the factors of the given numbers. Now let's move on to question number 3. Here you have to determine the factor of the following pairs by finding factors. So ये जो pairs हैं इनके factors को हमें HCF निकालना है, इनके factors को ढूंढ के. So here the first number is 5 and 10. Let's find the factor of them. It's 1. So 5 के factors है HCF में it's 5 only. और जब हम 10 का निकालते हैं तो होता है 5 multiply 2. So 5 is the HCF of this number. Now let's move on to question number C. Let's do this question. 16 का HCF निकालते हैं. So this is the HCF of 16. So 16 का HCF क्या निकला? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 4 times. अब similarly जब हम 48 का HCF निकालते हैं, so यहाँ पे जब हमने 48 का HCF निकाला तो आंसर है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So कॉमन क्या है? 2. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. So here 2 को हमने 4 टाइम्स जो है कॉमन ले लिया, बाकी हमने छोड़ दिया. So 16 is the highest common factor of the this question. So similarly children, you have to do the rest of the questions here. जैसे हमने इसे किया है वैसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं. Now let's do question number 4. Here you have to determine the factor by prime factorization method. Prime factorization method से हमें क्या करना है? इनके factors निकालना. So here we have found out the HCF by the prime factorization method. अब जो है हमें इनका HCF निकालना है. So for 30 the number is 2 multiply 5 multiply 3 and 45 के लिए है 5 multiply 3 multiply 3. So let's take common and the numbers are 5 multiply 3 which is 15. So 15 is the HCF of this number. Now let's find out the factors of this number. 12, 36 and 48. So when we find out the factors of 12, तो 12 के 2 multiply 2 multiply 3. अब 36 के हैं 2 times 2 and 2 times 3. 48 के हैं 4 times 2 and 1 time 3. 1, 2 and 3. So 2 multiply 2 multiply 3. So children, the HCF of this number is 12. I hope that you have understood it. Now let's find the HCF by division method. So division method से हमें HCF निकालना है. So children, here these two cannot be further divided. ये दोनों जो numbers लास्ट में बचे 3 और 5 ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते. So ये जो नंबर है इनमें ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे. So यहाँ पे 5 multiply 2 we are going to do and it's 10.
So here 10 is the highest common factor of these two numbers. Similarly, let's do the next question here. Let's do this question. 420 and 360. अब इन दोनों के factors निकालते हैं. Let's do it by 5. So children, here these two numbers cannot be further divided. So हमने ये जो numbers थे इन्हें इनके factors ले लिए हैं. 5 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So when we multiplied this, we got 60. So here 60 is the highest common factor of this number. So similarly children, you have to complete the rest of the questions that are given here. ऐसे आपको factors निकालने हैं. By the division method, we have done all the methods. जो भी methods यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारे methods हमने कर लिए. So you have to complete all these questions that are given to you as homework. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay with me.